Assalamu alaikum everyone and welcome to FutureServe Overseas Education Services. My name is Varda Mazhar and I'm currently serving as a communication expert, and the person next to me is Mr.Ammer Owais, who is an ESL and IELTS instructor at FutureServe, and we warmly welcome you all after a long break. ईद थी, ईद की छुट्टियां थी, ईद गुजर गई, मीठी मीठी ईद थी। आप सब ने हमारी तरह बहुत एंजॉय किया होगा। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक्स, सो लेट्स गेट बैक टू स्टडी, टू एजुकेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग जो कि आप लोगों को हमसे रिक्वायर्ड है और जो हमें आप लोगों को प्रोवाइड करने में मज़ा आता है। सो गाइज, व्हाट इज़ FutureServe एंड व्हाट आर वी प्रोवाइडिंग? सो बेसिकली FutureServe इज़ एन एजुकेशनल advisory and we are serving into three broad categories. That is the career counseling, the international exposure and the skills development. Under the umbrella of career counseling, we help you find the best university and the discipline in which you would love to pursue your higher education from abroad. And about the countries, so basically we are serving in United Kingdoms, United States of America, Germany, Australia, Turkey and so much more. All you have to do is to visit FutureServe Overseas Education Services for more details. Plus, under the umbrella of career counseling, we also help you through your applications, your documentation and your visa processes. International exposure, the most important, because when you're traveling abroad, you have to understand the environment, you have to understand the tradition and the culture of the place you're going to live. So basically, we give you the pre and the post departure tips. We also give you the insights of the tradition and the culture. We also help you through some different things that would be helpful for you when you're traveling abroad. In the skills development, we help you through some of the professions which are helpful for you when you are working in the job market of the place you're gonna live. So this is it a little bit about FutureServe. इसके अलावा career counseling, international exposure, इसके अलावा skills development, इन पे अलग से हम लोग live sessions कर रहे हैं। मैं personally आप लोगों के साथ कुछ information share करती हूँ, थोड़ी सी detail में करती हूँ, so please stay tuned for more. So guys, today we are going to discuss adjectives. So Mr.Ammer Owais is going to tell us briefly what adjectives are, its usage, its importance, its rules and each and everything. So sir, over to you and welcome back. Thank you so much once again, in the name of Almighty Allah, who is the most merciful and beneficent, the King of the Kings and the King of the Day of Resurrection. Yeah. Thank you so much for giving me the chance again under the shelter of the FutureServe Overseas Education Services. Pleasure. It was all about 1 week or something. We didn't know how to speak anything on the camera. It was Eid, so we enjoyed a lot. And yes, today I'm going to discuss about the adjectives, what adjectives are, how will we use adjectives, what are the rules, what are the points, what are the kinds, what are the most important rules that a person should apply in speaking all the way in the writing and creative writing and structures. Right? Starting with the introduction. So what basically adjective is? Adjective is a word which modifies, defines, explains, promotes or demotes noun and pronoun. Now, as we've discussed about the pronouns, what pronouns are? The words which are used in place of noun. What are nouns? Nouns are the words, the naming words, right? So a word which modifies or describes or promotes or demotes the noun or pronoun is what known as the adjective. So adjective is a part of a speech. It is mandatory. It is important to learn. It is important to understand its formats, because the adjectives are the words which are so important when you write something in the IELTS examinations, as well as you write something for the content writing. So if you're speaking something, if you're trying to give good grades to the person you're actually speaking to, it means that you're using the appropriate adjective and its usages, right? So what basically adjective is, it is a word which modifies noun and pronoun. For example? If I talk about my own self, I'll say that Mr.Ammer Owais is an experienced teacher. So what if I talk about that word experienced? It is what's known as the adjective. Why? Because it is defining me, that I've got a good experience in teaching IELTS examinations. If I talk about you, I would say that Miss Verda is a talented lady. So what if I say that's talented? That is actually defining the adjective of a noun and pronoun. So basically, the adjectives are the words which define noun and pronoun.
he's a fat guy, so fat is an adjective. I am a rich man, so rich is an adjective, right? That girl is pretty, pretty is the adjective of that sentence. That boy is very weak in mathematics, so weak is what known as the adjective, because they're actually defining and modifying the noun or pronoun. I would say Mr. Imran Khan is a great leader, so great is what known as the adjective, right? एक चीज जो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है उर्दू में इसको इसमें सिफ्त कहा जाता है, जब आप किसी की सिफत बयान करते हैं, that is adjective. सही. Yes. That's great. Okay, so why is it important? Is it important? Because the adjectives are actually used to, as I said before, to promote or demote a person. If you're demoting a person, you would say she's an ugly lady, right? So it is demoting a lady. It is demoting the noun and pronoun. But if I say that Miss Varda is a pretty lady, so I'm promoting a lady, right? That is the word that defines or modifies the noun and pronoun. That is the particular case I teach in the class, and I teach to the students, and I tell them that you have to understand the points of rules of the adjective, because you will not be able to speak anything if you do not have the appropriate words of the adjectives. Like, you know what, say we have got 1,500 adjectives around the English communication, so you cannot memorize all of the 1,500 vocabularies, but the point is you should memorize only 100 or something, just to promote or demote a person. Like if you're irritated by a person, so you would say, come on man, what a disgusting guy it is. So I would say, all right, that is disgusting. I'm actually talking about a person who is demoted by me. So that is the word you're actually demoting or you're promoting. As I say, Imran Khan is a great leader, so great is what something, the adjective what I have used to promote a person. Okay, instead person के अलावा you can also like demote or promote a place or animal or thing or anything that Whatever. comes under the umbrella of nouns. Noun, Yeah, yes. right. वो noun में आ जाता है, सारे का सारा. Yes. Okay, so अब बात इसमें आती है हमारे पास adjective की kinds. अब adjectives की जोन सी kinds हैं, ये adjective की kinds को समझना बहुत ज़्यादा important है. स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, क्लास में बैठ जाते हैं, कहते हैं सर एडजेक्टिव का मतलब मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये इसमें सिफ्त को बयान करता है. ठीक है, आई कॉन्कर विद द कंटेंशन दैट ओके, ठीक है, ये नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं, लेकिन इसके कोई काइंड्स भी है ना. आपने उनके काइंड को सीखना है. अब देखें, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, quantitative adjective, numeric adjective, demonstrative adjective, interrogative adjective, distributive adjective, proper adjective, positive degree of adjective, comparative. Sorry? Positive what? Degree. Positive degree. Degree of adjective. Okay. Comparative degree of adjective. Okay. Superlative degree of adjective. I like the most. Yes. Yeah. समझ आ रही है ना? Yeah. तो आप जब एक एडजेक्टिव को डिफाइन करती हैं, उस टाइम पर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन में इस एडजेक्टिव का जो काम होता है ना, वो एक गाड़ी में पेट्रोल का काम होता है. क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपने एक बंदे को क्या करना है. फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हो कि यार शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुलेस्ट लेडी, तो ये तो इंग्लिश गलत हो गई. मोस्ट ब्यूटीफुलेस्ट, नो, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, राइट. इसीलिए जो है जनाब, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. मैं आपके लिए ग्रेजुअली स्टार्ट होता हूँ. ठीक है. व्हाट इज द क्वालिटेटिव एडजेक्टिव? ओके. It talks about the quality of noun and pronoun. Now, how does it talk about the quality? Listen to me, very open ears, right? Yeah. I would say that it talk about the size, the taste, and the color. The size, the taste, and Size, the color. taste, and color. Right? I would say it's a sweet dish. Taste. Salt. Right? I would say salt dish. It's taste. Yeah. Right? I have a blue car. Blue car. Color. It's talking about the quality of adjective. Yeah. Noun and pronoun. Okay. Right? Third one, it was the quality of a person. You know, it talks about the quality. For example, he is an experienced surgeon. He is a talented surgeon. He is a perfect engineer. He is an intelligent driver. I am an intelligent grammar teacher. ये तमाम चीजें क्या चीजें? They are defining the quality of noun and pronoun. तब जाकर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन क्या होती है? Modify हो जाती है. You're actually modifying noun and pronoun with the help of the quality.
वो बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत बुरा लड़का है, वो बहुत फजूल खर्च लड़का है, वो बहुत पैसे जमा करता है, वो बहुत अमीर है, वो बहुत गरीब है, वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत बुरा है, वो बहुत अच्छा है। ये तमाम चीजें क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के जुमरे में आ जाती है। मेरे पास काली गाड़ी है, मेरे पास सफेद गाड़ी है, मेरे पास नीली गाड़ी है, काली सफेद चिट्टी व्हाटएवर, आपने क्या करना है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में आपने डाल दिया उसको। डाल दिया। दूसरी चीज, बहुत मीठा है, बहुत नमकीन है, बहुत कड़वा है, सही है, बहुत खट्टा है, ओके, बहुत मिर्चों वाला है, बहुत मजेदार है, टेस्ट, या बहुत ठंडा है, बहुत गर्म है। साइज की बात करते हैं। आई हैव अ बिग हाउस, आई हैव अ स्मॉल हाउस। साइज क्या बता दिया? साइज, क्वांटिटी नहीं सॉरी, क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव। यप, समझ आ रही है मैडम? यप। सेकेंडली, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। व्हाट इज क्वांटिटी? मिकदार। यस। चाय में थोड़ी सी चीनी डाल दो, चाय में थोड़ी सी चीनी डाल दो, थोड़ी सी, सम, क्वांटिटी, सम, एनफ, लेस, फ्यू, फीवर, मैनी, अलॉट। ये तमाम चीजें क्या हो गई? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जो कि एडजेक्टिव की क्वालिटी को नहीं सॉरी क्वांटिटी को। फॉर एग्जांपल अब से देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, सो सम मेरे पास क्या है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। स्टूडेंट्स क्या है? कॉमन नाउन है, तो नाउन में आ गया। सो दैट व्हाट अपना देयर आर सम स्टूडेंट्स सिटिंग इन द क्लास, सो सम मेरे पास क्या चीज है? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में आ गया इसमें। तो फर्स्ट वन वाज द क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जिसमें आपका साइज, स्मेल वगैरह आ जाता है। सेकंडली क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जब आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, उसमें आप क्वांटिटी को ही लेकर आएंगे। तीसरा मेरे पास आ जाता है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जांपल आई हैव 5 चिल्ड्रन, तो 5 मेरे पास क्या है? न्यूमेरिक एडजेक्टिव, राइट, ठीक है। ही हैज 4 कार्स, ठीक है। ही हैज 1 million rupees in his bank account. So 1 million मेरे पास क्या है? क्या हो गया? न्यूमेरिक एडजेक्टिव, नंबर को शो करता है। फॉर एग्जांपल आई हैव 5 rooms in my home, so 5 मेरे पास क्या है? क्या है? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। तो ये तो हो गया न्यूमेरिकल। पहले मैंने बताया क्या? क्वालिटेटिव, देन क्वांटिटेटिव एंड देन देन न्यूमेरिक। अब तीसरा मेरे पास क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। चौथा पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव किस चीज को कहा जाता है? मलकियत किसी चीज का। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई मोबाइल, माई, ये मेरा मोबाइल है, सो ये मोबाइल किसका है? मेरा है, तो किसको डिफाइन कर रहा है? मुझे। सो दैट इज द पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, ये चीज मेरे पोजेशन में है। सो दैट इज व्हाट पोजेसिव एडजेक्टिव। माई, यूअर, हिज, हर, देयर। परफेक्ट, समझ आ रही है मैडम? ठीक है। इट इज देयर जॉब, इट इज नॉट माई जॉब। इट इज देयर जॉब, देयर और माई दोनों मेरे पास क्या चीज हो गई? पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। समझ आ रही है मैडम? तो ये हो गया हमारे पास चौथा काइंड। पांचवा मेरे पास है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है ना, ये बड़े मजे की चीज है। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आप इसको इस सेंस में कह सकते हो कि दिस, दैट, दीज, दोज। कौन से? दिस, दैट, दीज, दोज। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में सिर्फ यही फर्क है कि दिस मेरे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है और दिस मेरे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। लेकिन इन दोनों को हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे? मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूं। मेरे पास सामने जो है एक ब्लैक लैपटॉप पड़ा हुआ है, ओके, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि दिस इज अ लैपटॉप, दिस इज अ लैपटॉप, दिस इज अ लैपटॉप। तो इस सेंटेंस में दिस मेरे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि मैंने इसको डायरेक्टली क्या किया? डिफाइन कर दिया दिस इशारा देकर, ठीक है, इंडिकेशन देकर। दिस इज अ लैपटॉप, दिस इज अ लैपटॉप, ब्लैक, सॉरी, दिस इज अ लैपटॉप, ठीक है। अगर मैं कहूं कि दिस इज अ ब्लैक लैपटॉप, अगर मैं कहूं दिस इज अ ब्लैक लैपटॉप, तो ब्लैक मेरे पास क्या है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। मैंने कहा था साइज, स्मेल एंड कलर। कलर मेरे पास आ गया ना, आई हैव रेड कार, आई हैव ब्लू कार, आई हैव ब्लैक लैपटॉप। तो मैंने कहा आई हैव ब्लैक लैपटॉप। तो अगर मैंने इसमें ब्लैक डाल दिया, इसका मतलब ये है कि इस ब्लैक की वजह से ये जो दिस है, ये क्वालिटी अपना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक वर्ड आ गया बीच में। अगर मैं इसमें से ब्लैक को स्किप कर दूं, मैं कहूं कि यार दिस इज अ लैपटॉप, चलो ठीक है, दिस इज अ लैपटॉप, द यो लैपटॉप, ये एक लैपटॉप है, ठीक है, तो बस ठीक है, ये एक लैपटॉप है। तो मैंने सिर्फ लैपटॉप को डिफाइन किया। मैंने ये नहीं कहा कि काला है कि सफेद है कि नीला है कि जो भी है। अच्छा। मैंने इसमें कलर को डिफाइन कर दिया। दूसरी चीज साइज में डाल दिया, दिस इज अ बिग लैपटॉप,
दिस इज अ Big बिग लैपटॉप, दिस इज अ ब्यूटीफुल लैपटॉप, चलो ब्यूटीफुल डाल दे, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव डाल दूं, दिस इज अ ब्यूटीफुल लैपटॉप। तो अगर मैं एक इसमें ब्यूटीफुल डाल दूं तो ब्यूटीफुल की वजह से दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से डेमोन्स्ट्रेटिव अच्छा ठीक एडजेक्टिव है, में यानी कन्वर्ट कि हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जब आप दिस दैट दीज दोस्त के साथ कोई क्वालिटी या इस तरह की कोई चीज डाल देंगे तो वो फिर हमारे पास एडजेक्टिव अगर डाल देते हैं, हाँ वही सॉरी एडजेक्टिव डाल देते हैं तो फिर वो हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव बन जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। अगर आप एडजेक्टिव हटा दें तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही रहेगा, दिस दैट दीज दोस। वही तो कोई क्वालिटेटिव एडजेक्टिव उसके साथ ऐड कर लें तो डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सही जबरदस्त ठीक है। अब फॉर उसको एग्जांपल मैं आपको एक हाँ बड़े मजे की चीज बताता हूँ। ठीक है अगर मैं आपको कहूँ कि दिस कोई चीज सिंगुलर है और मेरे करीब है, दिस कोई चीजें प्लूरल हैं और मेरे करीब हैं, दीज कोई चीज सिंगुलर है और मुझसे दूर है, तो दैट या और कोई प्लूरल है और दूर है तो दोस्त दोज। अगर दिस दैट दीज दोज इन तमाम चीजों को मैं इकट्ठा करके एक सेंटेंस बनाऊं तो मैं क्या कहूंगा, दिस इज अ लैपटॉप एंड दीज आर लैपटॉप्स, दैट इज अ लैपटॉप एंड दोज आर लैपटॉप्स। ठीक है, ये मेरे पास हो गए दिस दैट दीज दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर मैं इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में सेलेक्ट करूं, मैं कहूंगा दोज ब्लैक ब्यूटीफुल लैपटॉप्स आर माइन, राइट दैट यंग ब्यूटीफुल लेडी इज माई माई कलीग। ठीक है, दैट ब्यूटीफुल कार इज ऑफ होंडा कंपनी। समझ आ रही है मैडम? तो ये तमाम चीजें क्या होगी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस दैट दिस दोस में मैंने उसको डालकर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों का मैंने आपको फर्क वाज़ेह कर बता दिया। ठीक है, दैट वाज कूल। समझ आ गई? नेक्स्ट मेरे पास है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव विच, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, ये मेरे पास क्या है जनाब, जो इसको WH क्वेश्चंस कहा जाता है, ये मेरे पास क्या होता है जनाब, ये है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में आपने कैसे करना है, विच ब्लैक सूट इज माइन, विच हैंडसम बॉय इज देयर, which talented teacher is teaching in future serve, which young gorgeous lady is sitting next to me। थैंक यू। समझ आ रही है आपको? ये चीजें मैंने बताई, यानी आपके पास क्या हो गई मैडम, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। आप इन चीजों में इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव को डिफाइन करते हैं। तो समझ आ रही है आपको मैडम? मैंने कहा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव, न्यूमेरिक, पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव। लास्ट बट नॉट लीस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, फॉर एग्जाम्पल each of the students has to bring the fee by tomorrow. Every student is talented, but the point is you have to study and work hard. ये मेरे पास क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं दो प्रोनाउंस को, नाउन प्रोनाउंस को अपने साथ एक सेंटेंस में लाकर उसको मैं एक अमली शक्ल देता हूं, तब जाकर आपका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव उसमें आता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके बाद एक और टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग वो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव। अब ये प्रॉपर एडजेक्टिव क्या चीज है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसका इल्म नहीं होगा कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है और किस तरह से जो है ना इसका वो बनेगा, एक्सपोजर इसका बनेगा। आई एम एन अमेरिकन, यू आर कैनेडियन, शी इज इंडियन, आई एम पाकिस्तानी। ये तमाम चीजें क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। ही इज इन इंग्लिश, तो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, कैनेडियन, अमेरिकन, स्कॉटिश, इरिश, ये स्पेसिफिक नेम्स हैं। ये मेरे पास क्या है मैडम, प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक हो गया? तो ये हो गए हमारे पास काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, सारे के सारे जनाब मेरे पास ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं जो कि मैंने अपनी तरफ से बेहतर बताने की कोशिश की। परफेक्ट, इतना अच्छे से ब्रीफ आपने कर दिया, सो उनके सेंस भी क्लियर हो गए हैं और उनकी जो एक सही डिटेल थी वो भी प्रोवाइड कर दी गई है। तो आई एम श्योर कि हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आई थिंक हमने 7 to 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव जो है आपके साथ डिस्कस किए हैं और सर अमर ने बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त तरीके से बताए हैं। इवन मुझे पर्सनली बड़े मज़े की समझ आई है, मुझे आज तक नहीं पता था कि इतनी काइंड्स भी होती हैं और अगर हैं तो उनकी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त डिटेल भी होती है और उसको हम इतने अच्छे से समझ भी सकते हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आप लोगों से को एडवाइस की जाती है हर सेशन में वो ये है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जितनी ज़्यादा इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे, उनको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाओगे, उतने ही आप इसमें महारत हासिल करोगे। सो
इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कम अप, आपके पास हमारा कमेंट बॉक्स है, प्लीज़ हमारे पास अपने क्वेश्चंस छोड़ें. Sir Amar is live for you people. The platform is for you guys. You can ask any kind of question and we are here to reply. We are here to respond. Okay, sir. So what else do we have जी, in adjectives? व्हाट एल्स में हमारे पास है मैडम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. अच्छा जी, चलो. डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हमारे पास होते हैं जनाब. पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और सुपरलेटिव अच्छा, डिग्री मुझे ऑफ ये एडजेक्टिव. बताएं, ये क्लियर करें कि वो काइंड्स और डिग्रीज हम इनको सेपरेट करते हैं? हाँ ना. अच्छा ठीक है, ये सेपरेट चीज़ है. हाँ सेपरेट है ना. वो तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है क्या चीज़. ठीक है ठीक है. जब आप पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को डिफाइन करते हैं तो आप उसमें क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, एक बात मेरी याद रखना, आप जब डिग्रीज को लाओगे आप उसमें क्वालिटी लेकर आओ. अच्छा ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ हेल्दी बॉय. ओके. तो हेल्दी मेरे पास क्या चीज़ है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव फॉर पॉजिटिव एक बंदे के लिए. पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज फॉर सिंगुलर, only for singular noun and pronoun. It can be singular common noun, it can be singular proper noun, it can be a building, a house, a man, an animal, a living thing, non-living thing, but the point is it should be one. It should be one. Positive degree of adjective. He is a rich man. सिर्फ singular. बस बात खत्म. This dog is very clean and neat. क्या हो गया? एक डॉग. एक पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. जब आप कंपैरेटिव डिग्री में आते हैं तो आप दो नाउन या सिर्फ दो प्रोनाउंस को कंपेयर करते हैं आपस में. कंपैरिजन. सिर्फ दो को. कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. जब आप कंपैरिजन करते हो किसी चीज का, आप फॉर एग्जांपल कंपैरिजन करते हैं किस चीज का? नाउन का और प्रोनाउन का. सिर्फ और सिर्फ दो. दो से ज्यादा नहीं. दो से कम भी नहीं, दो से ज्यादा भी नहीं. दो से कम हो गया तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, दो से ज्यादा हो गया तो सुपरलेटिव हो जाएगा. अच्छा. फॉर एग्जाम्पल, दिस बिल्डिंग इज बेटर देन दिस वन. दिस टीचर इज मोर टैलेंटेड देन दिस वन. दिस कार इज बेटर देन दिस वन. अच्छा. समझ आ रही है आपको? आप अच्छा, अब इसमें जो THAN वाला देन लगाना है आपने. हाँ जब आप लिखते हो THEN वाला नहीं लगाना, वो फिर वो दूसरी चीज है. अच्छा, आप थोड़ा सा डिफरेंस भी बता दे देन और देन में. देन जब, देन से. अच्छा. THEN जब. ठीक है. ओके देन, ओके देन. अच्छा, जैसे स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर लेते हैं THERE वाले देयर और THEIR वाले देयर, है ना? इसी तरह देन और देन में भी होता है. ठीक है. सो एग्जैक्टली ये कितनी छोटी छोटी सी बातें ना जो हम इग्नोर करते हैं. मामूली मामूली छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हमसे बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं. बिल्कुल हमारे पास बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं और यही रीजन है कि हम उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते सही तरीके से. ठीक है. तो जब आप कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की बात करती हैं तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में आपने दो नाउन या दो प्रोनाउन को आपस में डालना है. जब आप बात करती हैं सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, किस चीज पर? सुपरलेटिव डिग्री. तो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में आप एक नाउन को सब के साथ जो है आप उसको अबतर करार दे देते हो. रिलेट कर देते हैं? रिलेट नहीं, आप एक नाउन को तमाम नाउन्स में सबसे अपर हैंड दे देते हैं, अपर करार कर दो. फॉर एग्जांपल, मिस वर्दा इज द बेस्ट. नो डाउट. मिस वर्दा इज द बेस्ट. तो गुड, बेटर, बेस्ट क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है कि नहीं? गुड. बिल्कुल. बेटर इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. बेस्ट इज द सुपरलेटिव. यस यस यस. देखो आप फॉर एग्जांपल एक बात करते हो ना, जब आप कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में जब आप देन की बात करते हो, THAN की देन, तो आपने उस एक THAN की वजह से आपने एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ कंपेयर कर दिया. जब आप राइट करते हो तो उसमें आपने THAN लिखना है. स्पीकिंग में तो देन का इतना कुछ फर्क नहीं होता. ठीक है. जब आप THEN की बात करते हो, फॉर एग्जांपल, तब क्या हुआ? देन आई विल गो टू द स्कूल. इफ द रेन स्टॉप्स देन आई विल गो टू स्कूल. तो उसमें आप THEN लगाओगे. वो किस चीज को डिफाइन करता है? THEN. देन गो. THEN ये हमारे पास प्रोनाउन है. जब आप उसको देन आई विल गो टू द स्कूल, तो THEN जो है वो जब के लिए यूज होता है. किसके लिए? जब के लिए. और THAN जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में यूज होगा. जब आप कहते हो कि दिस क्लास इज बेटर देन दैट क्लास, दिस रूम इज बेटर देन दैट रूम, दिस कार इज बेटर देन दैट कार. तो जब आप दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस को आपस में क्या करते हो? कंपेयर करते हो. थर्ड हमारे पास लास्ट बट नॉट लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, जिसमें आप एक नाउन को तमाम नाउन्स में सबसे ऊपर ले जाते हो. फॉर एग्जांपल, फ्यूचर सर इज द बेस्ट कंसल्टेंट्स.
फ्यूचर सर्व एजुकेशन सर्विसेज इज द बेस्ट एजुकेशन सर्विस। तो मैंने पूरी दुनिया में जितने भी कंसल्टेंट्स हैं सब में से मैंने फ्यूचर सर्व को सबसे ऊपर ला गया। तब जो है जनाब आप इसमें याद करते, देखिए एक बात मेरी याद रखें, हमारे पास जो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है और सुपरलेटिव डिग्री है उसमें आपने चीजों को सीखना है। फॉर एग्जांपल गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है ना। इन चीजों को आपने याद करना है, आपको इंटरनेट पर इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। आपने जो है उसको याद करके फिर आपने उसको क्या करना है जनाब, अपने कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है, तब जाकर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन, यू आर एक्चुअली गोइंग टू डिफाइन दैट कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स इफ यू टॉक अबाउट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, राइट। सो आई विल नॉट बी कंसीडरिंग माय ओन सेल्फ दैट सुपीरियर देन अदर्स, बट द पॉइंट इज आई एम जस्ट trying to talk about the appropriate person, appropriate version that I'm literally going to take him up to the mark. That is the case that the superlative degree of adjectives are literally known as the most important structures. Now, as I say, most important. So the most important is the superlative degree of adjective that I'm using in my communication structure. So the adjectives are very important to learn, and every single student really have to put a very good amount of frank out of it. Because if you're not learning that adjectives, you will be considering yourself as indebted with a lot of problems in English communication. You will be facing problems in writing. You will not be able to understand anything. Like same is the case as I described about the then and then, right? Only E or A or the difference in there. But the point is they're actually discriminating and they're changing the entire tranquility of the sentence of a communication, right? So you would say, I'm better than him, right? So that is better, good, better, best. Better is the comparative degree of adjective. So I would say he is better than me. So I will not rise THEN. I would rise what? THEN. So that is the case that you are going to learn about the adjectives and its concept. I think it is enough from my side. I've already explained all of the rules and regulations and the points and the terms and conditions in there, and I've discussed about the comparative, superlative, and positive degree of adjective. Mr. Nasir Ali Shah from Chitral says, Amar Bhai, Eid Mubarak. Thank you so much, Nasir. He is the person who always watches our sessions. And don't tell me. Yes, and he is a shopkeeper and he's dealing in the spare parts of the vehicles. He's a very good friend of mine. We have dealt a lot of times and we have sat together, and he has a very, 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 very good sense of humor. He always makes me laugh. And he's a good man. Thank you so much, Nasir, for texting again, and keep sharing my sessions so that everybody in Chitral can watch me. Thank you so much. And I think it's enough from my side. There's only one message from my side. Thank you so much. It was so good. The session was very informative. I've learned a lot, and I'm sure that you guys have learned also. So it's not the point to become a learner, to become a gunner. It is the point to practice the things that you have learned from FutureServe Overseas Education Services, the things that you are learning from Mr.Ammer Owais. Still, if you have any questions, if you have any queries, if you want more details, you can always visit FutureServe Overseas Education Services. If you need English as a secondary language key classes, if you need English conversation key classes, if you are stuck in IELTS or anything else, you can visit us. You can visit Mr.Ammer Owais. You can come to me. We are always here to help you guys. We are available from Monday to Saturday, from 10 o'clock a.m. to 7 o'clock p.m. So guys, take good care of yourself. Don't forget to follow us on Facebook. Don't forget to follow us on YouTube. So don't forget to follow us on Instagram so that you'll never miss the chance to attend our live sessions and all the other activities that are going on FutureServe Overseas Education Services. So this is it from our side. Stay tuned for more. We'll be back tomorrow with one interesting session on IELTS. So thank you so much for bearing us. Thank you so much for being with us. Be yourself. Stay tuned. Jazakallah. Thanks a lot. Thank you so Allah much. Hafiz.